So, hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to install the Autologue kit in my Continental GT, and this video will be divided into 4 parts. First will be the stripping the bike, second will be installing all the mounts of Autologue kit in the bike, third will be putting all the things together, and the fourth will be the conclusion, which will include the pro and cons and my opinion on the kit. So without any further delay, let's start with the video. चेस्ट माउंट मैंने लगा लिया है। अब बाइक को खोलना शुरू करते हैं। लेफ्ट एंड राइट पैनल, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। Okay, so done with the very easy part, which is left and right panel and seat. Now let's remove the main hectic part, which is the tank. Okay, so before start taking your tank off, make sure करें कि आपका इंजन ठंडा हो। वैसे मेरा इंजन 3 दिन से चालू नहीं हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और ये भी मेक श्योर कर लें कि आपकी जो फ्यूल पाइप है उसमें प्रेशर, जो पेट्रोल का प्रेशर है वो भी एकदम ना हो। ओके, तो टैंक मैंने निकाल लिया है। फॉर द सेफ्टी रीज़न मैंने टैंक को भी बाहर रख रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ भी हो घर के अंदर, तो इसलिए टैंक अभी बाहर है। अब अपन खोलना शुरू करते हैं इसके योक को। 6 नंबर की आपको एलन की लगेगी, ज़्यादा ही टाइट। ओके, तो अब ये चीज़ ऑर्डर रही है भाई। ओके, ये अब कैसे निकलेगा इससे? हाँ, एक साइड का निकल आया, दूसरी साइड का निकल आया। ओके, ये निकल आया, इसको यहीं पे रखते हैं। लेफ्ट साइड का क्लिप ऑन, ठीक है। अब अपन को हेडलाइट खोलनी है, तो अब अपन पहले ये खोलते हैं, फिर उसके बाद अपन लोग इंडिकेटर खोलते हैं। तो अपने पास थोड़ा रूम हो जाएगा पता करने के लिए इंडिकेटर वाले तार एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं। फाइनली ऑलराइट, तो अभी बाइक की सारी स्ट्रिपिंग हो चुकी है। बस यहाँ पे टैंक नहीं है, टैंक मैंने बाहर रखा हुआ है। तो मैंने संप गार्ड निकाल लिया है, जाना का फ्रंट का बार निकाल दिया है, कनेक्टिंग बार जो होता है वो निकाल लिया है, इंडिकेटर वाले क्लैंप्स निकाल लिए हैं, इंडिकेटर निकाल लिए हैं, और लेफ़्ट और राइट साइड का पैनल और सीट निकली हुई है। और बाकी बाइक कुछ अभी ऐसी दिख रही है। मैंने ये अभी जो क्लैंप्स हैं ऑटोलॉक के, ये भी निकाल लिए हैं। अब इसे खोलते हैं और बाइक पे फिट करते हैं। और बाकी कुछ आप उधर देख रहे हैं, तो मैंने बॉडी पार्ट्स भी निकाल रखे हैं। अभी जो मेन ऊपर का फेयरिंग है वो भी अंदर ही है, उसको बाद में निकालेंगे। तो अभी मैंने ये पैकेजिंग जो है ये खोल ली है। तो इसमें लेफ़्ट और राइट साइड का कुछ नहीं बताया गया है कि कौन सा लेफ़्ट साइड का कौन सा राइट साइड का है।
तो मैंने कैसे फिगर आउट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें ऑटोलॉक का डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे, तो ये सीधा ऑटोलॉक का डिज़ाइन है. सो लेट मी जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट. Place it over here, slide it down like this, so this will come over here and this will be coming right here, right? Yes, maybe right. This will be like this, like this. Okay. ऑलराइट एवरीवन, गुड मॉर्निंग. तो आज दिन चेंज हो चुका है. दिस इज़ डे 2. ओके, तो कल रात में मैंने इसका सामने का क्लैंप तो लगा लिया था, बट ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में है. तो अभी ये जो पीछे के 2 क्लैंप है, इसको खोल करके इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते क्या सीन होता है. ओके, तो ये चीज़ मैं अभी रिकॉर्ड नहीं करूँगा, इसको मैं ऑफ कैमरा ही सीधा करूँगा. ऑलराइट, तो ये एक क्लैंप और है. तो अब ऑटोलॉक की जो किट आती है पूरी, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है मैनुअल की कौन सा पार्ट कहाँ पे जाएगा, तो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा. तो ये जो क्लैंप है, मुझे बहुत टाइम लग गया फिगर आउट करने में, ये कहाँ पे लगेगा, हेडलाइट पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा. बट इवेंचुअली आई फिगर्ड इट आउट कि ये जो आपका सम्प गार्ड मैंने हटाया था, ये सम्प गार्ड की फिटिंग का है. तो ये जो अंडर बेली वाला आपका पार्ट है, ये उस पर जाएगा. अब देखो, मैं यहाँ पे ये होल अलाइन कर रहा हूँ. ये सम्प गार्ड के जो माउंटिंग वाला पार्ट आता है, ये उससे एकदम परफेक्टली अलाइन हो रहा है. और जो आउटर स्क्रूज हैं, वो जो आपके अंडर बेली पे जो आपके होल्स हैं, उससे एकदम परफेक्टली अलाइन हो रहे हैं. तो दैट्स हाउ आई फिगर्ड इट आउट. दिस विल बी द underbelly mount. So let's install this and see how it goes. I will be cutting it here and I will be fitting this. Okay, तो अभी मेरे को क्या पता चला कि ये जो underbelly और जो side की fairing है, वो these are not fitting with the Zana crash guard, so I will be not fitting these as of now. I will be skipping that. और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अभी मैंने, अगर आपको ये दिख रहा हो, तो यहाँ पे दाग पड़ चुके हैं. दिस इज़ द पेंट क्वालिटी. द पेंट क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड. ये जो दाग पड़े हुए हैं, किसके पड़े हुए हैं? ये जो कपड़े से ये पैक था, तो इसी के जो सेक्शन वाले धागे डिज़ाइन है, वही डिज़ाइन यहाँ पे पड़ चुका है. तो अगर आपको कैप्चर हो पा रहा हो तो दिखा दूँ. सो दिस इज़ इट. सो दिस इज़ द क्वालिटी. ऑलराइट, तो टॉप वाइज़र का जो माउंटिंग ब्रैकेट है, वो मैंने इंस्टॉल कर दिया. ये माउंटिंग ब्रैकेट उस टॉप वाइज़र के ऊपर ही आया था, तो उससे निकाल करके मुझे इसमें फ़िट करना पड़ा. तो अभी ये इसकी सेटिंग तो प्रॉपर हो गई है. अब इसके ऊपर वाइज़र बिठाता हूँ मैं. फिर वाइज़र बिठाने के बाद कंटिन्यू करता हूँ. ओके, तो टैंक मैंने लगा दिया है. अब इसका सामने वाले किट का मैं एक बार अलाइनमेंट चेक कर लेता हूँ कि ये स्ट्रेट है कि नहीं है. थोड़ा सा इसको उधर पुल करना पड़ेगा. Alright, so let's finish with the final part of this video. तो इसकी बात हम लोग बाइक चलाते चलाते करेंगे. Okay, so this will conclude things like why I like installed this fairing kit in my bike, what are the pro and what are the cons, and etc etc. Okay, so first let me tell you why
I installed this fairing kit on my bike. So before start making any comments, let me clear out few things. Like Continental GT 650 by no means is a small bike. Continental GT is a decently sized motorcycle, but thing is like when it comes to the person of having height more than 6 feet, so when they sit on the bike, so the bike looks kind of small. So that is the one reason like I wanted a fairing kit on my bike, so that my bike can look a little bit bigger. And also I wanted something to resemble the look of Triumph and Ducati. So these are some of the reasons I wanted a fairing kit on my bike. Okay, now comes the part like what are the pro and cons. So see, there is no pro of this fairing kit. Only pro is like for me is the bike is looking pretty much bigger compared to its stock look, and rest are the cons. So the cons are like now you cannot mount your phone, because as you can see this is like here, and when I tilt my steering, so I cannot mount it vertically over here. I have to find something like where I can place my mobile in the center of this console. And another con is like in the night you will be like अरे बाप रे भाई, ये गाय भैंस से दूर रहो यार. Okay, so another con is in the night the visibility will be like much more lower. So why I'm saying that, because now the headlight is mounted on the fairing kit, and so when you maneuver your bike, so the headlight will be like pointing in one particular direction. It will be not moving as you move your steering. So in the night, so that is one drawback. Then another drawback is you cannot okay, like you can, but the thing is like it will be pretty much difficult to do the change of the headlight. Suppose if I'm having LED light as of now, this one, and I want to change it to some other design, so I have to take out this whole fairing top mount, and then again I have to install it back. So that is one extra job I have to do. Same thing goes with the full fairing kit. So as of now I'm not having the full fairing kit, but if I install the full fairing kit and I go for service, then I have to again remove the every part, and then the oil filter and the oil drain we can do. So that's also a drawback. So in my opinion, this mod is not very user friendly, but it looks good. So that's the only thing. Now comes my opinion. So like and will I suggest it or not? So I will not suggest it, because so this top rack cost for 25,000 and the full fairing cost of 40,000. So in my opinion, if you are having that much money laying around and you don't have any use of it, then you can go for it. And otherwise what I will suggest is invest that money in some proper direction. Like you can invest on gloves, riding boots, riding jacket, and proper riding helmet. All those things are much more important than having this fairing kit. So instead of investing in this kit, invest somewhere else. Okay, and another thing is like 25,000 for the top rack is, I don't feel like it is well priced kit. I think it is overpriced.
Why I am saying is because, see, this is my opinion. I don't have any hard feeling for Autologue or someone else. Autologue did a very good job designing this kit. The bike looks very beautiful, but the thing is, like, 25,000 for this kit is not justified according to me. If they are putting their R&D cost in it, then I think that's how they are trying to break down the price of their R&D. But I think, according to me, this should cost from 15,000 to 18,000. That's the price bracket. If they keep this kit, then it's a pretty decent deal. But 25,000, according to me, it is not. बना रहे ना। आप आओगे वीडियो में? यूट्यूब पे रियल त्रिपाठी। Okay guys, so this is it. This is all about this video. If you have any more questions, and if I missed out some things to clear in this video, let me know in the comment section. I will try to answer all of them. And yeah, so that's it. I will see you guys in the next one. Peace.